One necessary step before forgiveness is revenge. Yes, you heard me right. In this video, we are going to talk about why forgiveness is really important for inner child healing and what are the problems when we want to forgive people who have hurt us in our life. So, forgiveness as a tool for inner child healing. Let's get started. Hello everyone, welcome back and I am Jain, and in this video we are going to deep dive into the power of forgiveness. Why forgiveness is supposed to be a superpower. So हम सभी को पता है कि forgiveness का meaning क्या होता है and why it is important in our lives. But why this particular topic I'm focusing on right now is all about inner child and why it is important to heal our inner child with the help of forgiving ourselves. So, forgiveness is not about forgetting about the past hurts, but it rather is about freeing ourselves from all the negative emotions of the past. Forgive करने से हम किसी और का ईगो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं. Forgive करने से what we are doing to ourselves is we are liberating our own self from all the bondages of the past. So forgiveness is a courageous act, and the first one to forgive is the bravest. Forgive करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ये पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉरगिव करना है तो हमारे इनर चाइल्ड को क्यों फॉरगिव करना है. सी, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जब हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, केयर टेकर के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, टीचर के हिसाब से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, बट वी गेट हर्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स. ऐसे कितनी बार होता है कि हम अपने आप को हर्ट करते जाते हैं इन ऑर्डर टू ट्राई टू फिट इन द सोसाइटी. आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करने के लिए कितनी बार ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे आप खुद हर्ट होते हैं और वो पेन और सफरिंग आपके अंदर हमेशा रहता है. सो इन दिस प्रोसेस ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग वी आर forgiving ourselves first. So the first person you need to forgive is yourself, and when you forgive yourself you also forgive your inner child. So this is an ultimate technique which helps you connect with your inner child at a very deeper level, and you try to heal the wounds of your past life by acknowledging that whatever was there was not in your control. आपके पास्ट में जो भी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड फॉर्म हुआ है वो आपके कंट्रोल में नहीं थे, एंड दैट इज़ वाई you do not have the power to change that, but now you have the power to forgive your inner child, to help your inner child forgive about those memories because it was not in your control. So what happens when we try to forgive our inner child, or we try to forgive ourselves, or we try to forgive anyone who has ever hurt us? Why it is very difficult to forgive people? तो फॉरगिव करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं. तो फॉरगिव करने से पहले एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है जो हम सब भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ रिवेंज. और रिवेंज हमेशा एक नेगेटिव वर्ड नहीं होता है. whenever it comes to forgiving someone, revenge is also a positive word. How? Revenge positive कब हो जाता है? See, there are situations in our lives when people hurt us और हम उनको forgive नहीं कर पाते हैं. तो अगर revenge पूरा हो जाएगा ना तो आप किसी को easily forgive कर देंगे. So how are you going to take the revenge before you forgive someone? Close your eyes, sit quietly and peacefully. Think of the people or the situation in your life which is hardest to forgive. So what is that difficult part of that incident which is hard to forgive?
आप उसको फॉरगिव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उस इंसिडेंट को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, आप उस पर्सन को फॉरगिव क्यों नहीं कर पा रहे हैं. What is the hardest thing about it? Write it down. Which is the hardest part of forgiving that person or that event in your life? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई टू इमेजिन वॉट वुड यू लाइक टू डू टू देम. आप उनको क्या करना चाहेंगे? वॉट काइंड ऑफ रिवेंज यू वॉन्ट टू टेक फ्रॉम देम? हाउ डू यू वॉन्ट देम टू सफर? And what do they need to do to get your forgiveness? If they are begging for your forgiveness, what is that particular thing that you want them to do? Imagine that happening now. How do you want them to suffer or do the penance? So taking revenge is not a very ideal solution to a problem, but in some cases we cannot imagine a person forgiving. So the idea behind taking a revenge is to identify that emotion. तो जब हम उस इमोशन को होल्ड करके रखते हैं, जब हम उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये इमोशन मुझे ट्रबल कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू रिलीज योर इमोशन फर्स्ट बिफोर फॉरगिविंग एनीवन. So the idea behind taking revenge is to identify the emotion and release it. That's why we are imagining that whatever is there which is still incomplete with that person, we have completed it. So if you wanted that person to suffer, you just expressed your feeling or your emotion that that person should suffer. See, there is no right or wrong way in the world. आपने वो एक्सपेक्ट किया, उस एक्सपेक्टेशन को एक्नॉलेज किया, वो एक्सपेक्टेशन को अपने सामने होते हुए देखा, एंड नाउ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन दैट इट इज़ डन, योर रिवेंज इज़ ओवर, नाउ यू आर रेडी टू फॉरगिव एनीथिंग और एनीवन. In this video, we have discussed why forgiving is important. What is that one step which is missing, which hinders in the way of forgiving someone, and that is revenge. How to take revenge in a productive way. I hope you will take advantage of this process of forgiving yourself, forgiving others, because forgiving is the bravest thing a person can do in their life. The more you know yourself, the more you forgive yourself. So start your forgiving journey as soon as possible, and like the video, subscribe the channel, and that's all for this video, and I'll see you in the next video.